So good morning students. I hope you all are well. In last video we have started our chapter number 6, that is functions, and we saw that how a particular function gets interpreted by the MySQL. Okay, so today I am going to start the type of functions. So the first type of function, that is scalar function, I am introducing you, and as I told you, the category wise the scalar functions are broadly classified into three categories. First is numeric function, second is string function, and non-obviously third is date and time function. Student, as I told you, all the scalar function are works according to the data type of value which we are providing as a argument within a function. Okay, so first of all I am going to introduce you the numeric functions. As I told you students, numeric functions are works only with the numeric data only. Means as an argument they require a numeric value, then they just work according to their specific functionality and give the result again in the numeric value. So now I am going to start the first ever function, that is numeric function. That first function is Sqrt function. Student, as I told you, this is the first writing methodology of function, that you must need to enclose the function with the parenthesis. In this parenthesis you will insert the value. Bacho, this parenthesis is strictly required with the function by which we are providing the argument or the parameter values. So first I am just introducing to you what is the use of Sqrt function. Students, Sqrt function is the first numeric function in the MySQL, which is a type of numeric function which is used to perform to get the square root of a given number. It is used to get the square root of a given number. Let I am taking an example. If I am writing a query like select Sqrt in bracket 25. Okay, select Sqrt in bracket 25. So the output which we are getting is Sqrt 25 is 5. As you know that the square root of 25 is 5. Student, if you will insert a particular decimal value here also, so definitely you will get the square root of that decimal number also. So whatever you are seeing here, that we are just inserting a numeric value here, so we are getting the output as a numeric value here. What it's mean? Its mean is कि Sqrt function हमारा न्यूमेरिक डेटा पे ही वर्क करता है, और उसका रिटर्न टाइप भी क्या है? न्यूमेरिक. रिटर्न टाइप मींस कि इसका जो रिजल्ट आता है वो भी किस डेटा टाइप का आता है? न्यूमेरिक. So this was the first function, that is Sqrt, which is used to find the square root of a given number. Okay students, now I am just introducing the next function, the second most function, that is Sine function. Student, Sine function is very special function which is telling you the specific signature, or can say that the particular value is positive, negative or a zero. Means, as you know that if particular value is positive, means it is always be above to the zero. If particular value is negative, then it is below to the zero. And as you know student, zero जो होता है वो तो न्यूट्रल होता ही है, वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, तो zero is neutral value. So if I am placing three queries, like if I am placing select sine of 12, so I am getting what? I will just write it here. Now the next query is select sine of minus 12, and the next is select sine of
0. So students, correspondingly I'll get the output as of this query, I'll get the value 1. For this query I'll get the value as -1, and for this value I'll get the answer as 0. So students, here 1, -1 and 0 is showing the corresponding value is positive or negative or 0. As bacha, you are seeing here that a value that is 12, that 12 value is positive, so their output is 1. This positive one shows that the particular value is positive, you have passed as an argument. Now here in sine -12, you are just putting as an argument negative value, so you are getting the answer as -1, which shows that the argument type is -1. And now in the next you are just putting as an argument 0, so you are getting the output as 0, because 0 ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना ही आपका नेगेटिव कंसीडर होता है. Okay students, so this was your next function, that was sine function. Now I am just jumping over to the next function, that is the third function of MySQL numeric category, that is power function. You can also write it as power. Students, as name indicate, this function is used to get the power of a given number. किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट निकालने का यूज होता है इसका. ओके, सो हाउ इट इंटरप्रेटेड फर्स्ट, just see this. If I am writing select power of 2, 3, so power of 2, 3, so the output will be students power of 2, 3 as 8. How this 8 will occur? Here students, as you are just having the first parameter value is the base and the second parameter value is exponent. So base is 2, exponent is 3. So how it interpreted now? As you all know, 2 into 2 into 2 gives you 8. Okay students, here you can also place the power of negative also. How? Select power of, let you are just placing here -2. Okay, 2 to the power -2. So students, how it will interpret? Just check here, 2 -2. So first, how it will interpret it in according to the calculator? So 2 to the power -2. As you know bacha, according to the exponential law, 1 is reciprocal to make that particular power as in positive. Now it become what? 1/4, and whenever you are just dividing 1 by 4, what you will get? As you know, 0.25. Understand? So the output of this query will be 0.25. Output of this query is 0.25. Okay, just note it down. It is very important bacha. Sorry. Now I am just coming over to the next function, that is also very important. The fourth function, that is your mod function. Student, this mod function will mostly used in Python as well as in MySQL also. Okay, now the mod function, how it works? Student, look it close. Let I am taking an example. Select mode of 11, 3. Students, this is your dividend and this is your divisor. As when I am just getting the output of this value, then I will get 11, 3 will be how it interpreted. The 11 is the dividend, 3 is the divisor. It is dividing it to 11 by 3. So you will get 3 3 is 9, and you are getting what? 2 as a remainder. So the remainder will be here.
सो स्टूडेंट मॉड फंक्शन क्या करता है आपका, मॉड फंक्शन आपका जो रिमाइंडर होता है उसको एज एन आउटपुट, एज एन रिजल्ट वो डिस्प्ले करता है। सो आपने देखा दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट इसने ली और रिटर्न टाइप क्या दी, एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू। दैट्स व्हाई इट इज द कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। ओके डियर, नाउ स्टूडेंट्स, according to the point of view of exam, the most important function are coming, that is round function and truncate. Student, round and truncate. Students, they both are almost similar, but there are certain number of rules which we are applying over to the round, which not be applied with the truncate. So students, first we are just taking an example of truncate function. I am just writing here select truncate 20, 11. Okay students, so 20, 11, so truncate function is used to remove the decimal places. ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है, रिमूव करता है डेसिमल प्लेसेस को। एज यू आर सीइंग दैट कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या हैं, पॉइंट के बाद 11, सो द आउटपुट विल बी व्हाट, 20 ओनली। अंडरस्टैंड? नाउ इफ यू आर प्लेसिंग सर्टेन कंडीशन विद द ट्रंकेट फंक्शन, like you are writing select truncate, let 20.11, let here I am taking 23.11, comma 1. So student, this is the decimal value जिसमें ट्रंकेशन होना है और this is the place कहां तक होना है। तो इट्स मीन अगर बच्चों डेसिमल पॉइंट यहां पर कॉमा के बाद अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो आफ्टर डेसिमल प्लेस में ट्रंकेशन होगा, और अगर यहां पे निगेटिव वैल्यू दे रखी है बच्चों तो यहां पे इंटीग्रल पार्ट में ट्रंकेशन होगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसको। सेलेक्ट ट्रंकेट 23.11, 1 मींस कि डेसिमल के नेक्स्ट पार्ट में, मींस डेसिमल पार्ट में क्या होगा, ट्रंकेट। तो ट्रंकेट होते ही ये आउटपुट आ जाएगा आपका 23.1 ओनली। आपका आउटपुट क्या आ गया, 23.1 ओनली, क्योंकि ट्रंकेट फंक्शन किसी तरह के कोई रूल को मैच नहीं करता। ओके, सो इस तरह से आपका 23.1 ओनली विल बी द आउटपुट। लेट आई एम जस्ट राइटिंग हियर select truncate 23.11, -1. Student, -1, what it mean? -1 means the left side, means the decimal इंटीग्रल पार्ट में होगा। तो -1 means ये वाली पोजीशन, तो इस वाली पोजीशन पे ट्रंकेट करो बच्चों। तो जैसे ही ये वाली पोजीशन ट्रंकेट होती है तो ट्रंकेट पे कोई रूल नहीं है, ये तो डायरेक्टली उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, 2 तो विल रिमेन सेम हियर, 3 कितना हो जाएगा आपका, 0, देन पॉइंट, रेस्ट ऑफ द ऑल डिजिट विल बी 0. सो ये इस तरह से आउटपुट ना दिखाकर आपको डायरेक्ट क्या दिखा देगा, 20। ओके, क्योंकि 20.00 मीन्स ओनली 20। अंडरस्टैंड बच्चा? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रंकेट। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द राउंड। राउंड इज जस्ट हैविंग अ सिंपल रूल दैट कि अगर पर्टिकुलर वैल्यू इज जस्ट अबव टू द 5 और इक्वल टू 5, then the preceding value will be increased by 1. Let I am taking an example like select round. Here I am having 193.32, 1. I do not have any place value, so the output will be what, 193 only, just because of after decimal place यहां पर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 3, दैट इज लेस देन 5। तो जो प्रीसीडिंग वैल्यू है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कोई प्लेस वैल्यू नहीं दी है, तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट विल बी इन द आउटपुट। और इंटीग्रल पार्ट के जस्ट बाद वाला डेसिमल पॉइंट क्या है,
आपका 5 से लेस है तो किसी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगा, 193 पॉइंट, बाकी सारे जो पीछे के हैं वो तो 0 0 हो ही जाएंगे। तो एज आई टोल्ड यू, पॉइंट के बाद 0 0 लिखने का मतलब नहीं होता, द आउटपुट विल बी 193। ओके, let I'm changing the value. If the value here is 193.72, what 193.72, then बच्चा the output will be what? देखिए कोई प्लेस वैल्यू नहीं दी है, डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर चेक हुआ, चूंकि ये 5 से अबो है, सो इट विल इंक्रीज 1 पॉइंट हियर, इट विल इंक्रीज 1 पॉइंट हियर, सो द आउटपुट विल बी 194 पॉइंट। अब इसने तो इसको एक इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये खुद तो 0 हो ही गया, और द आउटपुट विल बी 194.00, इट्स मीन इज 194। सो दिस इज द राउंड फंक्शन। ओके, now this is the round function when we are not giving any place value. Now I am just placing the place value also. So if I am writing here, select round 193.132, comma 1. Comma 1 means I would like to have a round of till decimal part का first place only, मतलब यहां तक का। तो first the next value will be checked that it is more than 5 or not. As it is not more than 5, then the output will be what? 193.1 only, and the leading decimals will be 0 0. If I am here placing what, let's 6, so and comma 1 means decimal के पार्ट फर्स्ट वैल्यू तक राउंड ऑफ होना है, तो जस्ट उसके आगे वाला नंबर चेक करते हैं। एज इट इज more than 5, so it will be 0 and it will be, this 6 will be 0, and due to the round off rule it increase the preceding value by 1, so the output will be 193.2. Understand? Now I am just changing the particular positional value. I am writing round 193.12 comma -1. -1 means just in integral portion. So in integral portion first place is 3, now according to the round off rule this is first place, that is 3, so इसी place को check करते हैं कि does it more than 5 or not. As it is not more than 5, so it will be 0 and the rest value will be same. आगे की जो इधर की वैल्यू होंगी वो तो सेम होंगी, पीछे वाली सारी 0 हो जाएंगे, सो इट बिकम 190.00 means 190 only. Let I am having here -2, so how it interprets बच्चा, just look at this, as -2 means इंटीग्रल पार्ट में सेकंड पोजीशन मींस टेंस पोजीशन, तो देखो यूनिट्स टेंस ये वाली पोजीशन पे आ गए, चूंकि ये क्या है आपकी मोर देन 5 है, तो इट विल बी 0 and it increase the preceding value by 1, so it become 2, then rest of the values will be zeros, so 200.00, so what it become now, 200. Okay, so that's all. These are the all numeric function. Students, first we have learned that how the functions are going to be interpreted in the MySQL. Then we are just applying these all the function on the table also, क्योंकि स्टूडेंट डू एज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये सारे के सारे फंक्शन आपके किस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ टेबल विल बी इन द एग्जाम पेपर, एंड एग्जाम पेपर में सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर आपको ये राउंड ऑफ और ट्रंकेट्स चलाने होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कॉन्सिक्यूटिवली। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।